हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड आज मैंने एक ही ट्रेड लिया था और उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था और $57 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। आई एक्सप्लेन यू गाइस द ट्रेड लॉजिक। बहुत ही सिंपल ट्रेड था बट होल्ड करना बहुत मुश्किल था फॉर मी पर्सनली, क्योंकि मैं भी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट ठीक ठाक अच्छा खासा ट्रेड करता हूँ आज रिसेंटली फ्रॉम दिस ईयर। तो ट्रेड लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। एंड इफ हैड हैव हेल्ड माय ट्रेड 1:4 यार। चलो ठीक है, इट्स फाइन, आई गॉट इट हियर 2.55। हाँ, तो द लॉजिक इज सिंपल। हायर टाइम फ्रेम में गोल्ड until and unless it breaks this zone, for me it's bearish, क्योंकि if you go on to the daily time frame, it's clearly bearish। देख सकते हो, it's clearly bearish, and after a proper 2-day pullback it took the liquidity above this zone and it gave a decent candle। and एक कैंडल मंडे निगेटिव बना था एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो ऊपर जाएगा, because the trend is downward and it's not possible for it to go up. That is not meaningful at all. तो trend bearish था, and then we hop on to the lower time frame। 4 hour में bullish था। 4 hour it was very bullish and I was scared to take this trade, because if you see in the 4 hour time frame, it was clearly bullish. After this strong blue candle, bro, who will want to take a sell trade? So it was very scary trade, but I took it because अच्छा था। The logic is pretty simple. We got multiple entries in this। इसने हमारा जोन टच किया and it gave a nice change in structure, like slowly थोड़ा evening star pattern इधर बनाया, and it stayed in the zone for decent amount of time in our zone, and it gave a breakdown here at this point। Wait, I'll just delete all this, delete। हाँ, तो here I'm just saying here, clearly observe करना, ये बहुत bullish trend था, but in daily you know it's very bearish, and वो गिरना ट्रेड ही तुम्हें लेना है, मतलब तुझे सेल ट्रेड ही लेना है। तो नाउ इट्स बुलिश but slowly it changed here, it gave a pullback and it was not able to break this high, again broke this low and gave a closure here। तो ठीक ठाक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, तो आई जस्ट टुक ए ट्रेड हियर। द स्टॉप लॉस अराउंड दिस जोन एंड टारगेट एट दिस जोन, एंड एग्जैक्टली वही मिला मुझे टारगेट। बट इसमें मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स है। योर फर्स्ट एंट्री वाज दिस कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये फर्स्ट वाला एंट्री था। द सेकेंड एंट्री वुड बी दिस वन आफ्टर ए पुल बैक। बताए कि वेट 1 सेकेंड, एक पॉइंट बताता हूँ। जब मैंने इधर सेल रेट लिया और इतना बुलिश कैंडल बनाया, भाई मुझे इतना टेंशन हो गया भाई, तू सोच भी नहीं सकता है। मुझे लगा कि आधा काट लेते हैं, क्या फालतू में लॉस लेना है। देन बट स्टिल मैंने नहीं किया। इमीडिएटली उसी नेक्स्ट कैंडल में उसको एनगल्फ करके नीचे बनाया, तो मेरा कॉन्फिडेंस ठीक ठाक वापस आ गया था। तो मैंने होल्ड किया था, बट फिर से इसने ऊपर आया, भाई बहुत तंग किया इसने। And the second entry point is this one. After this blue candle, after it gave an engulfing candle from the zone, rejection, break, pullback, engulfing candle, sell. Stop loss just below this one. Target easy one is to 2. I took till 4500। मेरा ट्रेड यही था भाई, I'll just tell you my trade। I booked some partials around 4509। 25% मैंने partials बुक किया था, मैं बाकी 75% मैंने 4501 में एग्जिट किया था। I should have held this trade at least for 4495 तक तो लेना चाहिए था, but it's fine। तो यही था ट्रेड लॉजिक।
It was very bullish in the 4 hour time frame and 1 hour time frame, but the higher time frame, daily time frame was bearish. So bias clear था, sell trade लेना था, and you just have to wait until the sell setup formed, and इधर sell setup form हुआ था. Nice decent, ये बहुत A plus नहीं है, but A setup है, अच्छा खासा setup है. If you would have taken entry here, this is A setup. If you would have taken entry here, this is an A plus setup. तो मैंने इधर ही ले लिया था, ए सेटअप है. इफ यू हैव टेकन हियर, दिस इज एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, तो ए प्लस सेटअप है एंड इजी टारगेट है. बट इधर तंग उसने बहुत ज्यादा किया भाई, इतना टेंशन इतना हो रही थी कि मुझे लगा कि क्या ही करूं, मुझे मैं काट लेता हूँ. फिर मैंने छोड़ दिया कि आई जस्ट टेल यू वन थिंग, इसको बड़े ध्यान से, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग. SET and forget. ट्रेड लेने समय तक तो देखते रहे, मतलब इफ एवरी 15 मिनट और 5 मिनट वॉट एवर योर एंट्री पॉइंट इज, देखते रहे. बट वंस यू टुक योर एंट्री, put stop loss in your brokers or prop firms. Set alerts near the prop. Set alerts in trading view where your stop loss is, and बस छोड़ दो भाई और कुछ मत करो. Don't do anything. When you adapt this thing, you will see a lot of growth in your trading. बहुत ही स्मूथ है, देख, easy 1:3 and you're done for the day basically. इधर थोड़ा सा टेंशन दिया था, but after that it gave direct target. So this is very important guys, set and forget.